Good morning, students. In our previous class, we have started climate. So, in this class, also just a recall of what we have done in our previous class. In our previous class, we have understood clearly the meaning of climate and weather. Now, both are the different terms, and both meanings are different separately. Now, in the last chapters of the same book, you have read about the landforms, the drainage of a country. Landform means different forms of land, whether it is hills, whether the area is hilly, mountainous, or it is a plain area. So these types of various landforms you have understood in a previous lesson. And just before this lesson, a drainage lesson was also there. Means drainage means the river system was also there. This year that drainage lesson is not coming, but it is included for the map work. So we have already studied about the various landforms and the drainage. We know the river system of our country, and these are the two or three basic elements that we one learns about the natural environment of an area. Means to learn the natural environment, to understand one particular means area's natural environment, what type of environment that particular area is having. To understand that clearly, we should first should know about the what type of landform it is, and what type of drainage system it is having, that particular area is having. And now in this chapter, you have learned about the you will learn about the third element, that is atmospheric condition that prevail over our country. Now this is the third element, that is climate. Now till now we have read about the outer phase of our geographical conditions, that is the landforms, various types of lands. Now we are going and the river system. Now we are in this lesson, we are going to read about the climate, which is we will go more deeper into the natural elements, that is the geographical conditions, the climate, and that you will not be able to see clearly, but you will feel that, and you will better understand now that what atmospheric conditions are prevailing over our country. Now question arises, why do we wear woolen clothes in December, or why it is very hot and uncomfortable in the months of May, and why it rains in June and July especially. Now all these answers are concerned with the studying of climate in India. Whatever climate of India it is, that only will decide whether the weather will be hot, or it will be cold, or when it will be rain. So all these will be decided by the climate of India. Now climate, as a definition, what do you mean by the word climate? Now climate, the word climate refers to the sum total of weather condition and variations over a large area for a longer period of time, that is more than 30 years. Now as a word climate, if we take, it is totally it means that the sum total of weather condition. Now the weather may be means it is not similar at one place at one particular time, one particular point of time, or at one particular place. What type of condition is there, atmospheric condition is there at of that particular region, is considered as weather. Now at different regions of our country, different types of weather atmospheric conditions are there, and all those weather conditions together are called as climate. That means variation over the large area. Climate will be understood in a better way when we understand that the weather condition, the atmospheric condition over a large area, and that two condition will be for a longer period of time. That means it can be more than 30 years, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक जो एक सी ही कंडीशन रहती है, उसे बोलते हैं क्लाइमेट. And weather condition, weather refers to the state of atmospheric over an area of at any point of time. That means एक particular time पे उस region में इस वक्त क्या atmospheric condition है, क्या उस वक्त अभी hot है, अभी थोड़ी देर बाद ही आपको ठंडी हवाएं चलने लग जाएगी, और थोड़ा सा weather cool हो जाएगा. तो means weather is the day to day, and every day means day to day, and at a particular region, a particular point of view,
what type of atmospheric condition it is, that refers to weather. And when that weather is seen over a large area, अगर हम यही कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर बड़े एरिया पे देखें, जैसे अभी हम राजस्थान में देख रहे हैं कि ठंडा है, तो और अगर हम यही इंडिया के बारे में अगर मानेंगे, तो राजस्थान में क्या कंडीशन है, अजमेर में क्या कंडीशन है, जयपुर में क्या है, दिल्ली में क्या है, इन सब का ओवरऑल हमको एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ इंडिया की क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एस मीन्स दैट वी हैव द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मीन्स तो क्लाइमेट एक पूरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे का नहीं, अपन एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पर थोड़ी सर्दी है, तो मीन्स यहाँ का वेदर, यहाँ का क्लाइमेट है ना ठंडा है, और इट विल बी कोल्ड क्लाइमेट हियर। अभी हम ऐसा नहीं रेफर कर सकते, क्लाइमेट मीन्स ओवरऑल ऑल द रीजन्स, ऑल द एरियाज will be counted as one, and then we will look to the how much temperature that particular region is having. The elements of weather and climate are same, and now whatever elements, whatever factors, uh, they are the same, essential elements are same for weather as well as climate. Then they are, we can see temperature, what means what is the temperature at that particular time period, and of that particular area। अगर हम यहीं की बात करेंगे, तो यहाँ का ये अभी टेम्परेचर क्या है, अभी टेम्परेचर 32 है या 22 है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। अगर यही टेम्परेचर अगर यहाँ का हम अगर इंक्रीज हो जाता है 30-40 के आसपास चला जाता है, तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होने लगती है। तो इसीलिए दैट इज द स्टेट ऑफ वेदर। अगर यही टेम्परेचर हम अब ओवरऑल इंडिया का देखा जाए, और वहां पर सदर्न पार्ट का देखा जाए, स्पेशली इन इंडिया में, तो सदर्न पार्ट का पूरा ऊपर जो हिली माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ का एज दे आर मीन्स गोइंग वी टुवर्ड्स एल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ है, ऊंचाई की तरफ है, तो वहाँ का क्लाइमेट हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में भी चला जाता है। तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हमें लगता है कि वहाँ का कूल क्लाइमेट है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो हमें वो एक एस्टिमेट लगाता है कि वहाँ का उस एरिया का क्या क्लाइमेट होगा, क्या वेदर होगा। प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो, उस समय की क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, प्लस विंड, किस तेजी से स्पीड ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स the amount of water vapor the air carries with it, and the precipitation. Precipitation are in different forms. It can be rain, it can be rainfall, it can be hail, it can be means snowfall. So all these are the different forms of precipitation, and these forms of precipitation can also decides that what will be the climate of, or what will be the weather of that particular area. Now you have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day, means एक दिन में भी आप ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक दिन में भी कभी तो सर्दी हो जाती है, कभी थोड़ा सा गर्मी लगने लगती है, कभी ऐसा लगेगा इतनी गर्मी लग रही है कि हम फैन ऑन कर दें, बट थोड़ी देर में जैसे ही फैन ऑन करेंगे तो हमें लगेगा कि थोड़ी सी ठंडक लग रही है, वापस फैन ऑफ कर दें। तो दैट इज the weather conditions fluctuate, means they do not remain the same, and there is some common pattern over few weeks or months, but there is some, if some common pattern is followed within few weeks or a month, then that is the for example, it is days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, wet or dry. If this pattern follows over a few weeks or few months, then on the basis of generalized monthly atmospheric condition, the whole year can be divided into seasons, that is winter, summer, rainy. That means the condition of the weather, if follows the same common pattern, that means कुछ समय के लिए बारिश हो रही है, 2-3 महीने के लिए एक साथ बारिश हो रही, 2-3 महीने के में 3-4 महीने में कंटिन्यूएशन में सर्दी का
मीन्स थोड़ा सा हमें ठंड लग रही है, तो दैट विल बी कमिंग अंडर द विंटर सीजन। एंड 2-3 महीने कंटिन्यूसली अगर गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, तो वो हमें समर सीजन का नाम दे दिया। और बहुत 3-4 महीने अगर कंटिन्यूसली बारिश आ रही है पर्टिकुलर रीजन में, तो वो रेनी सीजन हो गया। तो we can say that some common pattern is if followed in a particular week or in a month, then it will be considered as a season. The world is divided into number of climatic regions. Now the whole world is divided into number of climatic regions. Now what type, where that particular area is there, which where that particular country is present, accordingly the climate will be there of that particular country, and thus the whole world is divided into climatic condition. Now do you know what type of climate India has and why it is so? Now uh, as in further lesson, and I had in the previous class also I had made you clear that India is having the monsoon type of climate, and we will learn about this in this chapter about India's monsoon climate. Now, and do you know the word monsoon is derived from Arabic word mausim. Now the word monsoon, as soon as uh, जैसे ही बारिश का सीजन होता है, बारिश आती है, तो भाई हम बोलते हैं कि मॉनसून आ गया। तो द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड है एक मॉनसून, जिसे अ, ये अरेबिक वर्ड है मौसिम, जो मौसिम से निकाला गया है, वर्ड निकला है। और मौसिम का मीनिंग है सीजन। दैट मीन्स द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड मौसिम है, और उस वर्ड मौसिम का मीन्स होता है सीजन। सो मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब होल ईयर में जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है, उसे हम रेफर करते हैं मॉनसून। जैसे आज साउथ वेस्ट की तरफ से विंड ब्लो हो रही है, और वो रिवर्स होकर के वापस से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वापस से रिवर्स होकर वापस बैक रिटर्न हो रही है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज मॉनसून। The climate of India is described as the monsoon type, and in Asia, this type of climate is found mainly in South and the Southeast. Now, this monsoon type of climate is mostly found in Asia. In Asia, it is found in South and Southeast part. Despite an overall unity in general pattern, एक general pattern में overall unity है, there are perceptible regional variations in climatic condition within the country. एक country में ही हम लोग notice करेंगे perceptible regional variation means noticeable regional differences are there in these climatic condition. इन climatic condition में एक हम लोग regional variations means एक region में in the whole country, उस country के एक particular region में particular area में अलग डिफरेंट क्लाइमेट होगा, तो दूसरे रीजन में दूसरा क्लाइमेट होगा। तो ये रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं। नाउ लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, दैट इज टेम्परेचर एंड precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. अब हम लोग ये जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, वेदर और क्लाइमेट के सेम एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से हम लोग दो एलिमेंट चूज कर लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये दो एलिमेंट कैसे हर जगह एक जगह से दूसरी जगह वो वेरी करते हैं, डिफरेंस होता है, एंड कैसे वो एक सीजन से दूसरे सीजन डिफरेंस बताते हैं, ये हम अभी देखते हैं। Now in summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some part of the Rajasthan desert. Now in part of Rajasthan, we means generally we see that 50 degrees Celsius temperature is there in the deserted area, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Felgaum in Jammu and Kashmir. और उसी समय पर हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो फैलगांव है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर साउथ पार्ट में है इंडिया के, सॉरी नॉर्दर्न एरिया में है, ऊपर की तरफ, तो वहां पर हम देखेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हम लोग शो करता है कि एक ही कंट्री है, बट उसके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करती है।
On the winter night, the temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -40 डिग्री सेल्सियस. Means जब winter nights होती हैं, सर्दियों की रातों में जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री पे चला जाता है. और उसी समय हम देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम, जो कि साउथ पार्ट में है, वहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. Now, do you know in certain places there is wide difference between day and night temperature? कुछ कुछ जगहों पे तो दिन और रात में भी काफी differences देखने को मिलते हैं. Now, in Thar Desert, the day temperature may be rise to 50 degrees Celsius and drop down to nearly 15 डिग्री सेल्सियस the same night. Means अब अगर थार डेजर्ट में हम देखते हैं तो वहां पर रात के समय जो चला जाता है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. बल्कि डे टाइम में हम उसको देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस ही सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर इतना हाई रहता है और नाइट एकदम कूल हो जाती है. ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला. और ये डिफरेंस हम इतना देखने को नहीं मिलता है हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे और केरला में नियर द कोस्टल regions. Now let us look at precipitation. Now this was all about temperature, how this temperature varies. This temperature is very much difference is there in the temperature in the same country but in the different regions. Now the second element is precipitation. There are variations not only in the form of type of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. Ab ye precipitation can be in the form of snow also, in the form of hailstorm also, or in the form of rainfall also, or snow also will be there. Snowfall can also be there. So there can be variations, there can be differences in the form of or types of precipitation, and there also can be variations or differences in the amount and the seasonal distribution. Means कहीं पर अभी स्नोफॉल देखने को मिलेगा तो कहीं पर दूसरे रीजन्स में रेनफॉल मिलेगा देखने को. और ये भी अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा, कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, कहीं पर बहुत कम होगा. रेनफॉल तो होगा बट बहुत कम होगा. तो ये अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं रीजन टू रीजन within the same country. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, as Himalaya in the northern parts, Himalayas snowfall is mostly seen type of precipitation in the upper parts of Himalayas, and it rains overall rest of the country. और दूसरी जगह पे जबकि उस वक्त रेनफॉल होती है. The annual precipitation varies from over 400 centimeters in Meghalaya to less than 10 centimeters in Ladakh. अब एनुअल रेन जो प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल का, वो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, whereas in Ladakh we can see only 10 centimeter rainfall, and western Rajasthan also. Most parts of the country receive rainfall from June to September. ज़्यादातर जो रेनफॉल का समय होता है मोस्टली जून टू सितंबर होता है in our country. But some parts like coastal Tamil Nadu coast gets the large portion of its rain during the October and November. But हम लोग यहाँ देखते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट पे जो रेन है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के बीच रेनफॉल होती है. Now, in general, coastal areas experience less contrast in temperature condition. That means temperature conditions are uh, differences in temperature condition is very less. बहुत कम ये differences देखने को मिलते हैं coastal areas के पास, because as you know that coastal areas means near the water bodies, and when near the water bodies, as an example I can give you that when you boil a water, it boils fast and it gets cooled down also very fast. So this is the way कि जब ये कोस्टल एरियाज पे भी जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, तो वहाँ के टेम्परेचर कंडीशन इतना वेरी नहीं करता है, इतना डिफरेंसेस नहीं आता. वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. बट ये जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है, ये ग्रेट डिफरेंस है हमें इंटीरियर ऑफ द कंट्री में दिखता है. इंटीरियर ऑफ द कंट्री मीन्स
जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे, वाटर एरिया से दूर जाएंगे, इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ द कंट्री मीन्स वी कैन से दिल्ली एज एन इंटीरियर ऑफ अ कंट्री, वहां पर हम देखेंगे कि ये सीजनल कॉन्ट्रास्ट, ये चेंजेस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जिस सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई देगी। इट इज क्लियरली विजिबल ओवर देयर। Now there is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. Now अब northern plains में generally there is decrease in rainfall from east to west. जो east से लेके west तक जो जैसे भी rainfall है यहाँ पर, जो amount of humidity और ये water vapor is carried by the winds, ये जो कैरिड होता है, जो ये नॉर्थ जो ईस्टर्न पार्ट से आता है ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा रेनफॉल, वेयर एज कंपेयर टू द वेस्ट. Now these variations have given rise to variety in lives of people. Now due to this variations in the temperature, in the climatic condition, uh, the lifestyle of the people has been also changed. Means depends upon these climatic condition only. Now terms of food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. That means whatever food they eat, if they are living in hilly areas, that is in Himalayas and all, where there is very cold, where the climatic condition is very cold, according to that only they will like to have the food. That means वहाँ पर गरम गरम खाना चाहिए होगा ताकि वो उनकी बॉडी को गर्म रख सकें, गरम खाना खाएंगे, और क्लोथ्स भी वो वुलन पहनेंगे ताकि उनको ज्यादा सर्दी ना लगे। और जो वहाँ के हाउसेस भी होंगे वो इग्लू जैसे वहां पर बने होंगे ताकि वो ज्यादातर ठंड ना लगे, वो अपने आप को बचा सके। और वैसे ही ऑन द ऑपोजिट साइड एज कंपेयर टू दैट, इफ वी सी इन हॉट रीजन्स जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर के लोग वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। जैसे वो जो खाना खाते हैं वो ठंडा, कुछ सब कुछ ठंडा खाना पसंद करेंगे ताकि वो अपनी बॉडी को कूल रख सके, गर्मी उनको ज्यादा ना लगे। क्लोथ्स भी वो कॉटन के पहनेंगे, और हाउसेस भी वो थिक मड हाउसेस और या स्ट्रॉ के बिल्ड हाउसेस में रहेंगे ताकि वो हाउसेस भी ठंडे रह सकें, उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। Now climatic controls. Now this is the climatic controls. Uh, uh, there are six major climatic controls of the place of any place. They are latitude, altitude, pressure and winds, distance from the sea, continentally, ocean currents and relief features. So they are the six major controls जो कि हमारी climate को control करते हैं. Latitude, latitude means the latitudes, that means from the equator towards the poles, north pole and south pole, uh, whatever areas are there, that mostly is affected. And due to the curvature of the earth, the sun rays when directly falls on these latitudes, so whichever near the equator, they will get definitely more solar energy than the rest of the latitudes, which are means in the curved areas. And that is why it is the major control of climate. Then altitude also, the height also decides which what type of climate. Pressure and wind system will also decide what type of climatic controls will be there. Distance from the sea, if near the sea, the climate will be very moderate, and temperate climate will be there. But as you will move away in the interior, as you have seen, it will be very harsh climate, whether it is very cold or it can be very hot also. Then ocean currents also and relief features, what type of land is there. Even ocean currents, when the wind blows, due to the blowing of the wind, these waves also moves in the oceans and all. And then due to this moving of the wind with the wind, these waves move. And when in between, if island and all or any interruption is there, then they change their direction. And when they change their direction, then the speed of these ocean currents definitely will go slow down. So in such a way, these climatic controls, this ocean currents also help in climatic controls. So I end up here only. That's all for today. One thing to remind you that uh, one disaster management you have done,
that project on disaster management, one project you have prepared. Now another project you will have to prepare, that is the activity art integrated activity. You have to prepare the art integrated activity, in which first page you will prepare as your name, class, subject, and which subject, sorry, art integrated activity. You will give all the details of yourself. Then second page you will take of political map of India. In that political map of India, that will be political map where states will be clearly marked, and in that political map of India, you will just highlight Assam and Rajasthan. You can use anything to highlight Assam and Rajasthan in that political map of India. That is, you can use beads, you can use seeds, you can use different colored threads, you can use sparkles. Means any way you have to highlight with two different things, Assam and Rajasthan state in political map of India. So this with the highlight means you will highlight in the map, then this will be the second page for the map. Then third page you will take, and you will do the comparative study of Assam and Rajasthan related to climatic condition. First you have to do comparative study of uh, Assam and Rajasthan on the basis of climatic condition prevailing over there. Second, weather. And third, natural vegetation. So you will prepare this in art integrated activity, and you will do the comparative study also of both Assam and Rajasthan on the basis of first climatic condition, second weather, third natural vegetation. So three of these uh, points should be included in comparative study of Assam and Rajasthan. And you can do a comparative study also. And for making your project more presentable, you can stick pictures, or you can draw pictures related to these climatic condition, weather, natural vegetation. These three topics, comparative study with nice presentation, with uh, photographs, or with your with the drawings and all, you can show this art integrated activity. So within 2-3 pages you can do that, and you will upload that also on the means link I will provide you. Plus that pages you will staple it with the previous disaster management project. First disaster management project will be there, and behind the disaster management project, again you will means clip these papers of this art integrated activity also with that. So together, all the pages will be nicely stapled. If any doubt, you can ask me uh, in our next class, whenever it is. And till then, and this art integrated activity, I will ask you in the first week of February. And till then, if any doubt, you can clear your doubts with me whenever we'll meet next. That's all for today. Thank you.